नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। और बिफोर वी बिगिन विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी विल जस्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि क्या उस किस तरीके से वो बना गया है। तो अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। और इसमें टोटल सेक्शंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन 1 to 75 करेंगे पहले, उसके बाद हम 124 के ऑनवर्ड्स करेंगे। लेकिन before we begin with the concepts, let's just discuss about like what it was before Sale of Goods Act came in and before Partnership Act came in. तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हम एक्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कवर्ड था और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस भी कवर्ड थे। लेकिन फिर 1930 और 1932 में रिस्पेक्टिवली सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग से बना दिया गया और फिर पार्टनरशिप एक्ट इन 1932 अलग से बना दिया गया। अब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे इस आज की डिस्कशन में, और जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो जरूरी हैं जानने टू फर्दर अंडरस्टैंड द एक्ट इन टोटलिटी। सो हम अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो हमारे डेली लाइफ को रेगुलेट करता है। हम व्हाई डू वी से दैट इट रेगुलेट्स आवर डेली लाइफ इज बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे वी गेट इनटू डिफरेंट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो उसके साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, दूध वाले से दूध लेते हैं तो उसके साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी कैन से दैट इज द बेसिस ऑफ कॉमर्स। और क्योंकि कॉमर्स का बेसिस कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर वाले से अगर न्यूज़पेपर लेते हैं तो हम उससे न्यूज़पेपर लेते हैं, इन द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ द मंथ वी गिव द मनी टू द न्यूज़पेपर गाय। सो उस कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू फोर्स। दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द न्यूज़पेपर वाला, उसके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस ट्रांजैक्शन को लीगल इफेक्ट देने के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। But this is just one small example. We will take further case laws also to discuss the concept of the Indian Contract Act. तो अगर हम जब उस ट्रांजैक्शन की बात करें तो उस ट्रांजैक्शन को एक लीगल इफेक्ट देने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो डेवलप करा गया है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है। अब अगर हम राइट्स और ड्यूटीज की बात करें तो दे आर बोथ कोरिलेटेड। अगर किसी एक व्यक्ति की राइट है तो उसी ट्रांजैक्शन में जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ इन्वॉल्व है उसकी ड्यूटी होगी। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो एक इंसान की राइट जो है वो दूसरे इंसान की ड्यूटी होगी, और वेयर दूसरे इंसान की जो राइट है वो उसकी ड्यूटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द न्यूज़पेपर पर्सन एंड मी एज अ कस्टमर। मेरी राइट है कि मुझे रोज न्यूज़पेपर सुबह मिले, तो फिर मेरी ड्यूटी ये है कि मुझे एंड ऑफ द मंथ उसको उस न्यूज़पेपर का पैसा देना चाहिए। और उधर उसकी राइट है कि क्योंकि उस ड्यूटी है कि उसको न्यूज़पेपर डिलीवर करता है एवरीडे तो उसको पैसे मिलने चाहिए, वो उसकी राइट है। सो दे बोथ आर कोरिलेटेड। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी, वेयर देयर इज अ ड्यूटी देयर इज अ राइट, सो दे आर बोथ कोरिलेटेड। So right of one is the duty of another. That's what we have been we know that whenever we talk about the rights we always talk about the duties. So to begin further, let's first differentiate between moral rights and legal rights. So there is something called moral rights which morally bind us to do, but that is not necessarily a legal right always. ओके, सो अब जब हम बात करते हैं मॉरल राइट्स और लीगल राइट्स की, तो लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, लाइक लीगल के अंडर आता है राइट्स एंड ड्यूटीज, दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ, लीगल, not the moral rights or the moral duties are not provided by the law of contract. It is the, and not by any other law also. So it is the legal right and the legal duty which is provided by law. So law which lays down our rights and duties are substantive laws, and they are, and those are the laws which talks about like what is the right and what exactly is the duty. And for example, अगर हम substantive law की बात करें तो जैसे इंडियन पीनल कोड है वो सब्सटैंटिव लॉ है, उसमें ऑफेंस क्या है वो डिफाइंड है, और वो ऑफेंस अगर कमिट करा जाता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो वो एक सब्सटैंटिव लॉ में गिवन है। और उस
विक्टिम को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू get remedy or get accused and punishment under the defined law, तो वो procedural law के अंडर आता है. तो अगर हम substantive law की बात करें तो law of contract is also, Indian Contract Act is also a substantive law because it defines those rights and duties between the parties to the contract. अगर अब एक A और B के बीच में कोई contract हुआ है तो उसके बीच में, उनके बीच में कुछ राइट्स होंगी, कुछ ड्यूटीज होंगी, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर डिफाइंड है. लेकिन जब हम बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक म्यूचुअल क्रिएशन है बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या उनके क्लॉजेस होंगे. अगर मैं अपनी पुरानी कार बेचना चाहती हूँ तो मुझे वो कितने में बेचनी है, तो वो मेरी चॉइस है कि अगर वो मुझे 5 लाख में बेचनी है, 4 में बेचनी है, 3 में बेचनी है, और वो सामने वाला की भी चॉइस है कि वो उसको उतने में खरीदनी है नहीं खरीदनी. तो अगर हम एक एग्जाम्पल से ड्रॉ करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक म्यूचुअल क्रिएशन बिटवीन द पार्टीज है. इट इज नॉट समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, इट इज रादर क्रिएटेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स. लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं, तो एंसन सेज दैट इट इज अ पिक्यूलर ब्रांच ऑफ substantive law because generally substantive law enumerates or it provides details of the rights and duties, because other substantive laws would say what a right is and what a duty is, whereas Indian Contract Act does not provide that, because rights and duties, as we just discussed, are created by the parties themselves to a contract. So according to Anson, it is a peculiar branch of substantive law because law of contract determines the circumstances in which promise made by a person is legally binding on them. Now, please focus on this. Determines the circumstances. So it is only the determination of the circumstances which is taken care of by the contract. कि अगर दोनों पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑफकोर्स सेक्शन 10 जो पेरेंट क्लॉज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, जो बताता है हमें कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, और तभी आप इन्फोर्समेंट के लिए, और अगर कोई पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट तो आप कोर्ट जा सकते हैं. तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तभी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी एप्लीकेबल. लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रोल क्या है? टू डिटरमिन द सर्कमस्टांसेस, कि वो सर्कमस्टांसेस डिटर्मिन करना कि जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, और अगर नहीं हुआ है तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एज पर द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ लॉ टू द कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, कि अब क्या क्या सोर्सेज है जिससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है. टू बिगिन विद, नंबर 1 इज लेजिस्लेशन, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट्स वन ऑफ द सोर्सेज. Then law of contract is in the concurrent list, that is both the parliament and the state legislature can make the law of contract. This is the second source. Third is the precedents, as article 141 of the constitution has provided that the law declared by the Supreme Court shall be binding on courts within the territory of India. Now, for example, if the law of contract is silent upon something, अगर वो किसी भी इशू, कोई भी अगर लीगल इशू है जिसके ऊपर हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट को क्या करना चाहिए? तो उसके तहत उसको अगर हम कोरिलेट करें तो आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी इशू में अगर डिसाइड करता है so that will be binding on all the territories of India. That means the judgments which are passed by the Supreme Court of India will act as a precedent. Now those precedents are considered as a sources of law. Now से जैसे कि अगर कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा लीगल कंसर्न है जिसके ऊपर हमारा लॉ साइलेंट है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है, that also act as a source of law in India. Now let's relate it to the English law, because as I said that English law, or I may have just forgotten, English law से ही हमने Indian Contract Act बनाया है, and we are motivated from the laws of the from the provisions which are laid in the English contract law. So what is the position of English law or the decisions which are passed by the English courts? Are we bound by that, or we are not bound by that? Yes, we are not bound by the English courts or the decisions of the English courts
it definitely is a precedent. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है, तो उस सिचुएशन में जब कोर्ट डिसीजन लेता है, then definitely it takes the help of the English courts. उन्होंने क्या डिसाइड किया and what exactly is the good law in that particular situation, and that's what we actually incorporate in India also. So it is not a precedent, but it definitely has a pervasive value, and where the act is silent, there we will take the help of English cases, because they are good laws. And we have, for example, we have also followed Mohri Bibi case, the decision of the English courts. So not because we are bound by the English courts, but because we are we take in consideration the good laws. So therefore we do take the help of the English cases wherever the law in India is silent with respect to the contracts. Now, let's begin with the Indian Contract Act. So to begin with, we should first talk about the preamble to the Indian Contract Act. So Indian Contract Act, is it complete and exhaustive? अगर हमें कभी भी कोई एक जानना है कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है या कंप्लीट है, so we can understand it from the language of the preamble. Like, what is the language that is being used in the preamble of the act? That will definitely give us the understanding that whether it is exhaustive or not exhaustive. And this is the case with all the other acts also, because preamble is something which opens the gate to understand the respective act. So let's understand this from the preamble to the contract. It says that if you just focus on the highlighted area, highlighted words, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contract, it is hereby enacted as follows too. So what is the language here? To amend, to define. So wherever there is a language amend or to define, so that means that it is not exhaustive. Had it been the word to consolidate, that means if consolidate is used here, then it would be exhaustive, else it is not going to be as exhaustive. So what is the test to check the exhaustiveness of any act? What is the language in the act? क्या भाषा यूज करी गई है उसके preamble में? अगर to consolidate term यूज करा गया है तो exhaustive है, otherwise नहीं है. So also if we read, like, section 10 paragraph 2, which says that nothing herein contained shall affect any law in force in India, and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in presence of witnesses, or any law relating to the registration of documents. That means that this law will not be affecting those requirements which are there. For example, अगर हम कोई property खरीदते हैं तो उसमें registration is compulsory, and so that requirement will not really come in the way of the Indian Contract Act, like that. That means Indian Contract Act की जो भी conditions हैं वो उस situation में applicable नहीं होगी. वैसे जैसे कि अगर contract oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है, और लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो अगर आप रजिस्टर नहीं करवाओगे, so that will not really have any legal status. So therefore this particular paragraph in section 10 also gives us the understanding that it is not exhaustive. Now let's start with the agreement and contract. As I mentioned earlier, that agreement is made by parties. That means agreement दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है कि one parties agree to do something and the other person also agrees to do something, so they are mutually agreeing on something. So agreement is something which is between the parties, and contract, when we can say that, is made by law. That means an agreement is the creation of the parties, whereas the contract is the creation of law. अब वो कैसे लॉ यहाँ पे आ गया और अग्रीमेंट में हम लॉ का शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अग्रीमेंट की डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, कि एक पार्टी प्रपोज करती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है. लेकिन जब वो अग्रीमेंट को सेक्शन 10 की कंडीशंस के साथ हम अटैच कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 10 है तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज मेड बाय लॉ. That means the enforceability of an agreement will take place only if it is a contract. Otherwise, it will not be enforceable by law. So every agreement
creates a promise. I promise to sell my car to you. So this is a promise in so and so rupees, in 5 lakhs. And the other person says that I promise to purchase, I promise to take your car in 5 lakhs rupees. So there is another promise from the other side, that is acceptance of the proposal given by the proposer. So every agreement will create promise, and every agreement will creates rights and duties. Therefore, law of contract can also be called as the law of promises, because the promise is coming from both the sides. तो हम कह सकते हैं कि law of contract is the law of promises, because one person is promising to sell, the other person is promising to buy. Now let's start with the definition clause under the Indian Contract Act. We will pick up few definitions which are very important for the understanding. Section 2, clause H of the contract has given us the definition that an agreement enforceable by law is a contract. So यहाँ पे दो ingredients हैं कि एक तो agreement होना चाहिए, दूसरी बात वो agreement enforceable by law होना चाहिए. Now agreement क्या है? It is a transaction when one asserts anything and the other agrees. एक transaction है दो लोगों के बीच में कि एक agree करता है कुछ करने के लिए, and the other one, when one asserts anything and the other one agrees to that. So there is a mutual understanding between two parties with respect to one particular transaction. Now, what agreement is as per the Indian Contract Act, that is given under section 2 clause E of the contract? Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Now, to understand the agreement, we have to understand what is promise. What is there in what is given in section 2B is when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. So what does it say? The first lines, this defines acceptance. When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. So here, the first line is talking about acceptance, and second line defines what is promise. A proposal, when accepted, becomes a promise. So that when one person is giving a proposal to the other person and signifies assent thereto, the proposal is said to be accepted. And the second line says that a proposal, when accepted, it becomes a promise. So accepted proposal is a promise. So there are two requirements. Number one, proposal, and this proposal turns into promise. So one is proposing, and this proposal turns into promise because he is promising to do something. And the second requirement is acceptance. So proposal and acceptance makes a transaction. That transaction is known as agreement. तो यहाँ पे दो चीजों का हमें ध्यान देना है कि अगर हम किसी भी अगर हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो प्रॉमिस बात करता है ऑब्लिगेशन क्या है उस अग्रीमेंट में, क्या ट्रांजैक्शन है वो. तो एक प्रपोजल है और जो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है, जैसे कि पहली लाइन 2B की हमें सिग्निफाई करती है, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक्सेप्टेंस बन जाता है. तो ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है वो एक ट्रांजैक्शन बनती है और उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं अग्रीमेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि यही बेसिस है टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट फर्दर. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. A proposes to B, I want to sell my old laptop in 10,000 rupees. Will you buy? So what is it? A कहता है B को कि मुझे अपना पुराना लैपटॉप बेचना है 10,000 रुपए में, क्या आप खरीदोगे? तो ये प्रपोजल है. अब B का रिप्लाई है कि हाँ मैं आपका लैपटॉप खरीदूंगा. ये एक्सेप्टेंस है इन 10,000 रुपीज. लाइक दैट्स मिसिंग हियर. एक्सेप्टेंस है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस दोनों हो गया. A ने प्रपोज किया, B ने एक्सेप्ट किया. अब B और A के बीच में agreement arises for sale of old laptop and this agreement is formed. So what is it called? It is the formation of agreement by first proposal plus acceptance. Now let's identify इसमें promise कहाँ है, because when we say that agreement is a transaction of promises between two parties, where is the promise here? Now let's apply section 2 clause B.
टू क्लॉज बी ने हमें क्या कहा था कि when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted, it becomes a promise. So let's identify this promise in this example. इस केस में promise कहाँ है? Proposal of A becomes promise when accepted that I want to sell, कि मुझे बेचना है, कि यहाँ पे वो प्रपोजल जो जब कोई प्रपोज करता है कि मुझे ये चीज बेचनी है तो वो एक प्रॉमिस देता है साथ में कि हाँ मुझे ये बेचनी है, कि इंटेंशन है बेचने के लिए। तो इस प्रॉमिस, ये जो प्रॉमिस जो है, जब ये प्रॉमिस बन जाता है वो प्रपोजल ए का कार बेचने के लिए, यहाँ पे लैपटॉप बेचने के लिए यहाँ पे, तो ये एक प्रॉमिस है, converts into I promise to sell. So there is a promise. Now again let's just revise it once more. A का जो proposal है, when proposal of A, when it becomes promise, जब वो promise बनता है, because it has been accepted by A to sell the old laptop, that is I want to sell. क्योंकि जब वो promise आ जाएगा तब उसके अंदर आ जाएगा I want to sell. So this converts into I promise to sell. So therefore there is a promise to sell. So therefore we say that it's a set of promises from both the sides. Now come to clause C of section 2. The person making the proposal is called the promiser and the person who's accepting the proposal is called the promisee. तो 2C जो promise करता, जो proposal देता है उसको promiser कहते हैं, और जो proposal accept करता है उसको promisee कहते हैं. इसीलिए मैंने promise पहले समझाया, क्योंकि promise का जो शब्द का जो इस्तेमाल है वो दोनों साइड से है, proposer की साइड से भी है और जो accept करता है उस proposal को उसकी साइड से भी है. तो promiser and promisee. अब सेक्शन 2E की बात करते हैं. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. So proposal is defined in section 2A and also in section 2B. दोनों सेक्शन में proposal की definition given है. Now coming further, every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. Why do we say this? क्योंकि हर agreement contract जब ही होगा, वो agreement contract जब होगा जब उसके अंदर enforceability of law element attach हो जाएगा, नहीं तो वो contract नहीं होगा. क्योंकि हमें सेक्शन 10 बोलता है कि अग्रीमेंट में अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अग्रीमेंट इज नॉट समथिंग which on the basis of which we can go to the court as per Indian Contract Act. लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की प्री रेक्विजिट है. कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए एक कंडीशन है कि वो पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस उसके अंदर जो कंडीशन है सेक्शन 10 में वो अटैच्ड होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. सो सेक्शन 2 क्लॉज H बोलता है कि एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहेंगे? अग्रीमेंट होना चाहिए, पहली बात. दो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ. That means unless it is enforceable by law, that agreement will not be a contract and it will only be an agreement which is not enforceable by law. इसीलिए जो ये inverted commas में statement है, every contract is an agreement but every agreement is not a contract, is justified because of the provisions that we have. Now what do you mean by enforceable by law? अब वो कब वो agreement enforceable होगा? So the parent section of Indian Contract Act is section 10 of the Indian Contract Act, जो हमें बताता है कि कौन से agreements contract होंगे. What agreements are going to be contracts? Those are all agreements are contracts. So it's a positive connotation that all agreements are going to be contracts if they are made by number 1 free consent of the parties. That means जो consent है parties के बीच में जब वो agreement में enter करते हैं तो free होनी चाहिए. Number 2, parties to contract should be competent. That means competent होना चाहिए दो और जो जितने भी parties है contract में, they all should be competent to get into that contract. What is the competency of the contract? We will come to that later on, but competent होना चाहिए. Number 3, lawful consideration. That means जो consideration है, जो basis है contract का, वो lawful होना चाहिए, वो unlawful नहीं होना चाहिए. Number 4, lawful object. जो purpose है उस contract का, that should be lawful. That means the object of the contract should be
lawful, it should not be unlawful. For example, to kill somebody, किसी को मारने के लिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसी को मारना एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. Fifth condition is are not hereby expressly declared to be void. That means इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई भी अग्रीमेंट अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर करा गया है कि वो वॉइड होगा तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता चाहे उसमें और 4 कंडीशंस फुलफिल. एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज cannot be a contract क्योंकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्रेसली उसको void कहता है. We will talk about those expressly declared void agreements as well in the later discussions. Now, the second paragraph, as we discussed before, nothing here contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in presence of witnesses or any law relating to the registration of documents. That means contract जरूरी नहीं होता कि वो written हो, वो ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन जहां जहां पे हमें एक रिक्वायरमेंट है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस होना चाहिए. एज आई जस्ट पॉइंटेड आउट कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, विटनेसेस आर कंपल्सरी देयर. So that is sort of an as an explanation to further give an understanding that every contract which is in oral will not be a valid contract if there is other requirement which is attached as per some other law. Now coming to the another very important discussion, that is intention to contract. क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बोलता है कि इंटेंशन होनी चाहिए? जैसे कि अभी हमने सेक्शन 10 में बात करी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कंडीशंस होनी चाहिए. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने कहीं पर भी सेक्शन 10 में हमने कहीं नहीं देखा कि इंटेंशन का कोई जिक्र है. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बात करता इसके बारे में as it is. मतलब इसकी intention as ingredient or intention as one of the component is not there in section 10 of the contract. But English law, under English law, it is established rule that agreement is enforceable by law when parties intend to create legal relationship between themselves. So English law में it is established rule of law that there has to be an intention to make a contract. और हम इंग्लिश लॉ को फॉलो करते हैं wherever we are silent, that means wherever we are not clear. और इंटेंशन को लेके हमारे पास क्लियरिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रोविजन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, सेक्शन 10 के अंदर ये एक इंग्रेडिएंट नहीं है. तो लेट्स टॉक अबाउट बैल्फर वर्सेस बैल्फर. ये एक इंग्लिश केस है जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो उसको कुछ to maintain his life he's going to send some money, कुछ पैसे उसको भेजता रहेगा क्योंकि wife was in the foreign land and husband had come to their homeland. और वो वहां से उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा, लेकिन उसने कुछ जब बंद कर दिया पैसा देना तो उसकी वाइफ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट शी टुक हिम टू द कोर्ट. और कोर्ट ने उधर बोला to create a contract there must be a common intention of the parties to enter into legal relationship. और यहाँ पे क्योंकि वो सोशल अग्रीमेंट था दोनों पार्टीज के बीच में और कोई इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जाने के लिए, तो इसीलिए कोर्ट ने इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना. अनदर एग्जांपल, लॉर्ड स्टोवेल इन Dalrymple versus Dalrymple said that contract is not a sport of idle hour. That is, contract is not to be taken as a joke. Now, when we say that it's not to be taken as a joke means that it cannot be like in a joking way, ऐसे हंसते हुए या फिर जैसे मतलब मजाक में आप कोई अग्रीमेंट कर लो और उसको कॉन्ट्रैक्ट मानो, तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेगा. तो इस केस में भी एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया था क्योंकि वो एक सोशल अग्रीमेंट था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन लॉ ऑन इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट. अभी तक हमने जो समझ में आया है हमें उसमें ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 में प्रोविजन इज साइलेंट ऑन दिस. एंड अब कोर्ट्स ने क्या बोला है, तो कलाई हल्दर वर्सेस शेख, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में बोला कि गेस्ट डिड नॉट टर्न अप फॉर डिनर, लाइक दिस इज द जस्ट स्मॉल बैकग्राउंड कि गेस्ट डिड नॉट टर्न अप द डिनर, होस्ट देन फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस. होस्ट ने उसके ऊपर डैमेजेस के लिए सूट डाल दिया. कोर्ट ने क्या बोला फिर, दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज जस्ट एंटरटेनमेंट टू गेस्ट, so there is no legal binding.
सो यहाँ पे इंटेंशन की कोई बात नहीं करी हाई कोर्ट ने, लेकिन अवतार सिंह ने बोला है कि देर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, देर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच वी कैन अंडरस्टैंड बाय the ruling given by the Bombay High Court. So this is something which has been pointed out by Sir Avtar Singh. And then another case, Commissioner Wealth Tax versus Abdul Hussain. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि the test of intention to contract is objective test and not subjective. So this is something which is to be considered. That what do you mean by objective test? Objective means what others think about it. And what do you mean by subjective test? Like what is the mind of the doer at that particular point of time? जो इंसान perform कर रहा है, उसका उस वक्त क्या mind है? So how it appears to that person. So Supreme Court ने क्या बोला है कि the test of intention to contract is objective and not subjective. That means what it appears to others is to be considered in order to understand the in order to understand the intention to the contract. So here some reflection is there that there has to be an intention to contract. Now, if we conclude on the intention as a requirement in India, so intention to contract is a requirement for contract, and in the year 2009, in this particular case, Speech Software Technologies versus Neos Interactive Limited, in 2009, Honorable Supreme Court had given has given us an understanding that an agreement to agree in future is not a contract because there is no intention to contract. So what do we? So Supreme Court clearly here has given us a precedent that an agreement to agree in future is not a contract because there is no intention to contract. That means intention is required. Had there been an intention, so then it would have been a contract. So therefore, in India also, intention to contract is a requirement to contract, not because of the because of the provision that is given under the Indian Contract Act, but because of what Supreme Court has held in its landmark judgment. And we will also be understanding it from the Carlyle versus Carbolic Smoke Wall Company. ये एक landmark judgment है जो general offer के ऊपर है, तो जिसमें एक जब मैं facts बताऊंगी अगली वीडियो में, उसमें जब एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई है और उसको बोला है कि जो भी उसे यूज करेगा तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर होगा तो हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे, और अपनी इस स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए उन्होंने कुछ पैसा बैंक में जमा करवाया. तो जो उन्होंने पैसा बैंक में जमा करवाया वो एक इंटेंशन थी उनकी कि वो दे आर एक्चुअली सिंसियरली गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with people at large that if you do this and if you fulfill these conditions and then also if you catch influenza then we will compensate you. So if they are depositing certain amount in a bank, so that means that there is an intention behind it. Agar wo aisa, it's not just a mere advertisement, there is a real intention behind getting into contract with people whoever agrees to those conditions. So we will take up this case under the general offer. Now agreements जब हम बात करते हैं तो दैट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, जो जैसे कि एक बेल्फर वर्सेस बेल्फर के बीच में था, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, because it was domestic agreement between husband and wife, so that did not turn out to be a contract. There could be social agreements, social engagements, a friend calling somebody for lunch or dinner, spending some money, and then the other friend doesn't turn up, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डैमेजेस के लिए कोर्ट लेके चले जाओगे, क्योंकि एक वो सोशल अग्रीमेंट है. थर्ड वन इज कमर्शियल और प्रोफेशनल अग्रीमेंट्स व्हिच डेफिनेटली आर covered under the purview of Indian Contract Act because there is commerce involved, there are transactions involved, जिसमें commercial value है, जिसमें एक commercial value है in the sense that अगर कोई एक पार्टी नहीं fulfill करती है अपना promise तो दूसरी पार्टी का नुकसान होगा. So those commercial agreements or the professional agreements are well within the purview of Indian Contract Act. So this was all about the basic concepts of the Indian Contract Act. We will further get into the better understanding of the Indian Contract Act in the next video. Thank you.